Namaskar, Swagatam. We would like to welcome you all again on Independent Research Ethics Society's journey of knowledge sharing, journey of inspiration, and journey of cooperation, contribution, guidance. Thank you very much for joining today. Today we are celebrating 2 days instead of 3 days. We have shifted third webinar for tomorrow. Otherwise, that will be overdose, I hope. So we are celebrating only 2 webinars today. Number 1, today is Safe Motherhood Day. So we are celebrating Safe Motherhood with respected Madam Parul Joshi ji, Madam Usha ji, recommended by Professor Sudhakar Reddy ji. Thank you, Reddy Sahib. And our Madam Kamini Diwan ji, I would like to welcome her also. She is there. So Safe Motherhood will be celebrated really in an excellent manner. Please do stay, madam. Please do stay. Namaskar, sir. Namaskar ji, namaskar. And the second webinar is on Parkinsonism, because today Parkinsonism Day is also there. So 2 speakers, we will discuss for that in later stages after 1 hour. So every speaker has time of 15 to 20 minutes. 3 speakers, we have 3 speakers today, fortunately. Madam Kamini Diwan ji, Madam Parul Joshi ji, Madam Usha ji. So thank you. Thank you, sir. Thank you, AYUSH Sharma ji, for joining from Mauritius. Thank you very much. Namaskar, sir. Namaskar ji, namaskar. Thank you, Dr. O.P. Gupta ji from Assam, and our regular guardian, 2 guardians, Professor Vishnu Prasad Sharma ji and Professor V.K. Agnihotri ji. Thank you, sir. Now I would like to request Professor Vishnu Prasad Sharma ji. He is President Vishwa Ayurved Parishad, Assam and Northeast, as well as ex-principal of Guwahati Ayurvedic College. Welcome, sir. Thank you. Thank you. Namaskar. Good evening to everybody. Respected, distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this evening webinar, Safe Motherhood Ayurvedic Way. Most important subject today we have. In this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Dr. Usha DT, leader, Department of PG Studies in Prasuti Tantra and Sri Roga, JSS Ayurvedic Medical College, Mysuru. Namaskar, madam, and welcome to you to this evening webinar. Next, I want to welcome Bodh Parul A. Joshi, ex-principal, Sri Bala Hanuman Ayurvedic Medical College, Gandhinagar. Namaskar, madam, and welcome to this evening webinar on Safe Motherhood Ayurvedic Way. Only one more, Kamini Diwan is also there. So, Kamini Diwan, I want to welcome Professor Dr. Kamini Diwan to this evening webinar. Namaskar, madam, and welcome to this evening webinar. Once again, I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar on Safe Motherhood Ayurvedic Way. Namaskar, over to Pawan ji. Thank you. बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार आपका. मैं प्रोफेसर सुधाकर रेड्डी जी, नितिन उर्मलिया जी, निशांत शुक्ला जी, महेश शर्मा जी, सभी को नमन करते हुए प्रोफेसर वीके अग्निहोत्री सर से आग्रह करूंगा कि वो इस आज की प्रस्तावना में आशीर्वचन दें. थैंक यू प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी. नमस्कार सभी को. हमारा आई वेलकम ऑल द ग्रेट डिग्निटरीज, स्पेशली द गेस्ट स्पीकर्स ऑफ टुडेज वेबिनार
Professor Parul Joshi Madam, Professor Kamini Madam, and Professor Dr. Usha Madam, along with our great senior persons like Professor O.P. Gupta ji sir, and our Professor Vishnu Sharma ji, Dr. Nitin Nirmalia ji, Professor Nishant Shukla ji. I welcome all them, and it's a pleasure that today we are going to talk on safe motherhood. Of course, it cannot be possible without the Arshivachan and all the very distinguished speeches by the our respected lady doctors. I mean, the Professor Joshi, Dr. Dhiman, and Dr. Usha. But it is very clear that the safe motherhood could only be possible when the great support of the males of the society is there. The husband, the brother, all the near and dear and well-wishers, they are supposed to see that how the safety regarding the motherhood is to be completed, because their support, they're all more emotional support, financial support, social support, and all the way taking care of. Talking about the well-being of the mothers, would-be mothers, or when they are having their infants, their babies, and their kid. It's very, very important. Each and everything, sharing the responsibility in kitchen, in day-to-day life, day-to-day daily working, routine work. This is very important. So our role, the role of male, the role of husband, the role of brother, uncle is very important. So what next is important is we are going to listen from these our guest speakers with these initial words. I respect and I honor and I welcome all the guest speakers along with the great dignitaries who have joined our today's platform. Thank you so much, and over to Pawan Sharma. Namaskar. Thank you very much, sir. Thank you very much. Now I would like to request Dr. Usha Diti. Usha ji, welcome. Please unmute yourself and open your video. Welcome. Thank you, sir. Welcome, madam. Thank you. Thank you very much for your warm welcome. Should I start, sir? Yes, you can. Your stage is yours. Thank you. Share the PPT. You are co-host. Yes, sir. I'm sharing my PPT, sir. 1 minute. One minute, sir. In the middle, share screen option is there. I opened the share. I'm just trying to go with my desktop. I think I can share it from here. Your screen is shared. You can start your PowerPoint. Your screen is shared, I hope. Yes, sir. Yes, sir. I'm trying to open my PowerPoint now. Okay.
So my PowerPoint screen is visible now. PowerPoint started. Yes, sir. Now. Is it visible, sir? No, only white screen. How about now? Sir? It's plain. Minimize the size. Minimize the size. Is it okay? It is bigger than screen. Okay. 2 seconds, please. Is it okay, sir? It is okay. Okay. Yes. Shall I start, sir? Yes, In definitely. an outstretch, I would like to thank the organizer of AYUSH SAMRIDDHI, an international webinar series, for giving us such a good opportunity to share my opinion on this beautiful day of safe motherhood through an Ayurveda. So what is safe motherhood? Safe motherhood means ensure all the women receive the care they need to be safe, healthy throughout the pregnancy. As we know, the pregnancy and childbirth is a very crucial period of female life. So though it is a physiological change, but they certainly needs a tender, love, care, and a close monitoring from a well-trained people. Why it is so important? So as we know, Acharya Charaka had said, Yada apatyanam moolam nariha param runam tadvidato kade shatam kriyate yonimashitam tasmat tesham samutpittanam cha lakshanam sa oshidam shruti michanti prajanahu grahyakyamyam. That is, woman is a root cause of progeny. Any diseases which happens to the reproductive organs can interfere in the progeny and ultimately lead for infertility. If you take a proper care of woman, which leads for a better procreation and towards a welfare of humanity. So till a present day, the WHO reports there is 1.38 lakh women are dying every year because of pregnancy or internatal or postnatal complications. So let us have a view on how this Ayurveda helps in a safe motherhood. As per me, I can say there are main 3 pillars of Ayurveda which we can safeguard a motherhood. That is preconceptional care, antenatal care, and postnatal care. Ayurveda gives a Please bring PPT into the center if possible, madam. Yeah, sure. Yes, now it's okay. Now it's okay. Okay. So the 3 pillars of Ayurveda, as I said, preconceptional care, antenatal care, and postnatal care are 3 detailed explanations which are available in our classical Ayurveda text that gives how important it is to take care at the time of even the care of pregnancy. Start from the preconception, that is before conception, at the time of conception, and even after the delivery. So let us have a view on detailed preconceptional care. Our preconceptional care starts from the age of marriage. Ayurveda gives a very clear-cut age for a conception and even for a marriage. Why it is important? As it said, for a females, the age of conception is 18 to 22 years, whereas for the male, it is 20 to 24 years. Why? This is a most fertile period where there is a status of high ovarian reserve followed by healthy sperms availability. If conception takes place in this age, it can lead to samatvat gataviryo tau janiyat kushalobhishek. That is, we can have a healthy progeny and with a very good healthy life. So after the age of fertility or after the age of procreation, before planning of a pregnancy, as it always we know, pregnancy should not be an accidental, it's always a plan. Before planning,
better to undergoing with the Bija Shuddhi and Kshetra Shuddhi is very much essential. Bija Shuddhi. Bija Shuddhi is improving the health of ovum and the sperm. This can be done with the various panchakarmas which have been explained in Ayurveda like Vamana, Virechana, Basti and even with Nasya Karma also. So by this, the virtuality or the capacity of ovum and sperms increases, which yields in the better fertilization. Thus, we can avoid the abortion or unintended pregnancies or even the blighted ovums. Next, Kshetra Shuddhi. Kshetra Shuddhi means the part of implantation, that is uterus. Garbhashaya, what we can say it is. See, the healthier endometrium is the healthier progeny. Though the implantation can happen in the fallopian tube, but the fertilization happens in the fallopian tube, but the implantation takes place in the endometrium. With a proper Basti and Uttara Basti intervention, we can have a supplement or a nourishment in a proper way and a good implantation also. So with this, by proper adopting the Shodhana Karmas, after the Shodhana Karmas, the Patyas, whichever been explained by Ayurveda, preconceptionally and at the time of pregnancy and at the time of postnatal period are very much essential to achieve the evam jataha rupavantaha gunavantaha chirayushuhu, to attain a progeny with rupavanta, gunavanta and which is ayusha, which is essentially needed in a present scenario. Now, the antenatal care. Antenatal care is very briefly and beautifully explained in Ayurveda under mainly 3 different types, that is Samanya Paricharya. These are the must and should, do's and don'ts of pregnancy, like various activities and various hygiene practices. There it explains from morning to the bed how the pregnant lady should lead her life. What are the activities you are supposed to do and what are the things we are not supposed to do. And the Vishesha Paricharya, this is a cardinal part of Garbhini Paricharya, where it explains the different dietary modification from 1st month to 9th month and wherever the intervention is necessary. As we know, the pregnancy has its minor and major elements, way to treat, way to advise. So that is a little treatment I'll also mention. And the beautiful concept of Sutikagara. Sutikagara is a special room which is only meant for pregnancy, where she has to isolate from the society at the time of labor to encourage her better health and proper delivery and even the postnatal care. So that is presently practicing a worldwide to ensure an healthy baby from a healthy mother. So let us have a glimpse on the antenatal care, which has been explained by Vishesha Garbhini Paricharya. In the 1st trimester, usually it's, I have give 1, 2, 3, it's combined. He says, Asamskrita Kshira, a non-medicated milk, or a milk which is medicated with Madhuraushati Siddha Kshira, or use of milk, ghee or rice, or use of sweet, cold and liquid diets. So these type of pattern of dietary should be encouraged in the 1st trimester, because to balance the effect of progesterones. As we know, the progesterone has its own effects in the 1st trimester. It can cause us the uneasiness or the constipation or the hyperemesis gravidarum is the commonest element which we can encounter in the 1st trimester. So all these effects can be reduced with the properly dietary modification. And in the 2nd trimester, use of butter, ghee, use of meat or payasam, which has been concentrated to combat the increased demand by the fetus. So 2nd trimester, where the fetus, the maximum growth occurs, and whereas the demand for the need, maybe the iron, calcium, other micro and macronutrients increases. To combat this, there are different types of diets which are rich in proteins, carbohydrates, and vitamins were explained. Also, like use of Gokshura. Gokshura is a special drug. It is advised in the 6th month of pregnancy. As we know, the 2nd trimester is a time where usually the hypertension in pregnancy or diabetic mellitus in a pregnancy is highly possible. To minimize this occurrence, the Gokshura is highly beneficial if it is taken along with the Kshira under the supervision of the experts. And use of Prithakvarni or
other drugs like estimado, which are natural sleep inducers, helps to calm down the pregnancy. The various hormonal changes which appears at the time of pregnancy, which can lead to physiological changes. So use of these dietetics will help in controlling the minor elements of pregnancy. So next, the third trimester, the very important trimester here, the development occurs. Now the baby or the fetus is ready for a birth. Now, along with the dietetics, what we have seen from the first and second trimester, there are certain therapies like a basti and the vaginal tamponing, we'll call it as yoni pichu. It is advised. It helps in relieving of constipation or abdominal bloating. Almost 90% of pregnant women experiences the constipation or abdominal bloating in third trimester. So by these simple procedures, we can able to achieve the maximum result. And the relaxation of perineal muscle, that is preparation of birth canal for a labor. And it helps in the cervical remodeling. Cervical remodeling is a main function which is needed to labor. So by this, we can prevent the prolonged labor or obstructed labor or any other labor to the some extent. As we know, the first three dreadful causes for maternal morbidity or mortality is PPH, preeclampsia, and sepsis. So by following first, second, and third trimester Garbhini Paricharya with the proper intervention, I hope we can achieve or we can minimize the mortality or morbidity rate resulting of these three factors. So by with all these things, it is very clearly explained, Garbhinyam Garbhasamani. If we implement these dietetic regimens and the treatment at the time of Garbhasamaya, we can able to achieve or we can able to minimize the various pains which happens during a pregnancy, like pain in the back or abdominal pain, leg pains, chest burns, and also the proper elimination of vata or the flatulence or even mutra, purisha, which is highly recommended. Ultimately, our main aim, that is Putram Cheshta Sampadyate Sukhine Khale. At the proper time, there is easily expulsion of the baby, which is ultimately a goal of an obstetrician, a goal of safe motherhood is a healthy baby from a healthy mother can be certainly achieved. So the last pillar, as I said before, is postnatal care. I do agree, as important as preconceptional care, as important as antenatal care and internatal care, it is highly emergency and it needs a proper intervention. After going with all these physiological changes, now it is a phase where woman has to regain her pre-pregnancy state. For this regeneration, this postnatal care, it is highly recommended. It will be done on the basis of diet. We know the amount of calories which is required in antenatal is less compared to the postnatal. It has been estimated that a woman needs around 2,900 kilocalories per day in a postnatal care. This can be well achieved by a various different food articles or a different patyas which is explained from the time of its delivery till the Sutika Kala, that is approximately around 45 days. So, and also these foods helps in the nourishment of mother. See, the concept of food from preconceptional care, antenatal and postnatal, it is very clearly explains in our Kashyapa Samhita that whatever the aharas which is taken by a woman, it divides into mainly three parts. One, it is for the nourishment of the female or a mother. Second one, for the nourishment of a fetus which is growing inside. Third, that is a nourishment of stanya, where the breastfeeding is a species and species specification which is ultimately needed immediately after the birth. Hence, the diet is mainly required in maternal and fetal nourishment. And hygienal practices, very keen explanations on hygiene practices which are recommended in the postnatal care, which almost reduces a 90% of sepsis, which is resulting in high mortality rate, like Abhyangam or the body massages, Svedana, sudations, even in the care of episiotomy, even after the cesarean section. There are different methods of Abhyanga and Svedanas are explained, which is followed by fumigation. Fumigation, concept of mother and concept of newborn are in a different ways. And very good medications were explained to prevent the restoration of involution,
We know ultimately uterus inhalation to the pre-pregnancy state is mimics the healthy outcome of the pregnancy, and certain drugs like shatavari or estimolu, which acts as galactogags and which normalize the skin condition which go for the pre-pregnancy state. And certainly the postnatal exercise are the part and parcel of a woman after the birth to regain the entire support of the uterus so that she can have a wonderful life even after the delivery. So by these are the three main pillars what we have explained. We can achieve a complete safe motherhood. As we know, woman welfare is a welfare of humanity. So the proper approach of a woman at the time from a preconception care till the postnatal care will give an welfare of the humanity. So thank you everyone for giving me this wonderful opportunity to present myself with a safe mother. Thank you, Madam Usha ji. Thank you very much. Very briefly and nicely you have explained. Excellent. Please do join. I am really grateful to Dr. Sudhakar Reddy ji, who has introduced you, and I am really appreciating your flow of the speech as well as the content, as well as the precise time. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Now I would like to request our guardian, Madam Parul Joshi ji. Dr. Parul Joshi ji, welcome. Welcome. Good evening, everybody. Good evening, madam. Thank you very much for giving me chance to present my views on my favorite subject. I think I also have got the same problem which madam got. प्रॉब्लम तो हो रही है शेयर करने में है. आपकी स्क्रीन शेयर्ड है किंतु मैडम शेयर नहीं हो रही थी सर, अब हो गई है. गणेश जी दिख रहे हैं. वो तो होते हैं, उनके बिना तो सब कुछ व्यर्थ है. जी, अब आपका पावर पॉइंट भी शुरू हो रहा है. मैं सभी को होस्ट से एक करवक्त आग्रह करूंगा, कृपया थोड़ा सा अलर्ट रहें. कोई एडमिट करना हो, म्यूट करना हो, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस मैसेज भेजने में लगा रहता हूं, तो थोड़ी मेरी सहायता हो जाएगी. धन्यवाद. प्लीज कंटिन्यू मैडम. योर पावर पॉइंट इज विजिबल. We are going to talk on concept of safe motherhood. Is said Matru Suraksha Din in Hindi, our राष्ट्रभाषा. तो माता की सुरक्षा क्यों मनानी चाहिए, और भारत जैसे देश में जिसके पास अपनी खुद की भारतीय चिकित्सा पद्धति हो, और जैसे मैडम जी ने बताया काश्यप संहिता में बताया है, चरक सुश्रुत में भी बताया, वाग्भट में भी बताया है. अगर हम लघुत्रयी में जाए तो उसमें भी इतने सारे बताए हैं कि सगर्भा माता को क्या दिया जाए, वंध्या को क्या दिया जाए, ड्यूरिंग लेबर या लेबर पेन शुरू होते हैं तो क्या दिया जाए. इतनी सब बातें जब बताई गई है, तो फिर हम भारतवासियों को इसके ऊपर बात करने की क्या जरूरत पड़ी. तो ये 2022 का थीम था कि when babies are born, even mothers are born. So National Safe Motherhood Day. तो इसमें क्या बातें करते हैं, तो इनिशिएटिव, प्रैक्टिसेस, प्रोटोकॉल्स काफी सारे आते हैं, जिसमें गायनेकोलॉजी, फैमिली प्लानिंग, प्रीनेटल, डिलीवरी, पोस्टपार्टम केयर, ये सब जो मैडम अभी ही बोल चुकी हैं, इन सब बातों के ऊपर चर्चा होती है. तो ये बातें बार बार करने का मतलब क्या है? It shows that we are not aware of the problem we are facing. अगर 2 करोड़ प्रेगनेंसीज होती है
उसमें से 5 लाख माताओं का मृत्यु होता है। तो ये जो बच्चे भी कितने जाते होंगे, और ये तो सरकारी आंकड़े हैं, वाकई में तो कितना होगा जो अनरिपोर्टेड है। तो नीड ऑफ द सब्जेक्ट, तो नेशनल ये जो सेफ मदरहुड डे है, उसमें यूनाइटेड नेशंस में 1987 में to ensure that women go through pregnancy and childbirth safely, give birth to healthy children, and it was reinforced by inclusion of reducing maternal mortality during 2000 यानी 2000 to 2015, यानी हम 1987 से इसके ऊपर बात कर रहे हैं, and yet we have not achieved the goal we wish to. अब हम नेशनल में आते हैं तो बोलते हैं इसे एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेट। इसका इनिशिएशन जो है वाइड रिबन अलायंस इंडिया ने 2003 में किया था, यानी वी ज्वाइन क्वाइट लेट टू रेज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी हैबिट्स, अवेलेबिलिटी, accessibility of healthcare programs for women during pregnancy, childbirth, postnatal care, importance of maternal health and reduce maternal mortality rates in the country. लेकिन 11 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि कस्तूरबा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है, उनकी वाइफ है, उनका ये बर्थडे है। तो उसमें करना क्या है, मैटरनल हेल्थ जो है, overall health of the woman, and that reflects in the health of her family. इतना करने के बाद भी ये साइंस डायरेक्ट बता रहा है कि चाइल्ड मैरिज एंड अदर हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, और ये है उसकी 7th एडिशन 2017 की, उसमें ये बोलते हैं कि they fail to provide the necessary resources to provide adequate reproductive health, maternity and newborn care. अभी क्या है कि सभी कंट्रीज को एक ही लाइन में हाँकते हैं, हर कंट्री अलग है, हर कंट्री का रहने का तरीका, उसकी आदतें, वहाँ की सीजन, वहाँ का एनवायरनमेंट, सब कुछ अलग है। लेकिन अब जब हमारे पास ITRA आया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो अपने जामनगर में आई है, और अब जो है वो भारत का और भारतीय चिकित्सा और भारतीय चिकित्सकों का इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। इसलिए मैं थोड़ा अलग से बात करना चाहती हूँ कि नेशनल सेफ मदरहुड डे अप्रैल 15 में थीम क्या था, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, हमको शामिल किए बिना हमारी बात नहीं होगी। फिर 19 to 22 में क्या बोले, 19 में बोल रहे हैं 2019 में मिडवाइफ्स फॉर मदर्स, मिडवाइफ्स दीजिए, क्योंकि आपने जो हमारी दाई प्रथा थी उसको नष्ट कर दिया, और पश्चिम के देशों को देखकर अपनी भारतीय परम यानी बहुत ही अच्छी प्रथा थी जो समाज को भी जुड़े रखी थी, और उसको पता था कि इस फैमिली में कंजेनिटल प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए वो समाज को भी आगाह कर देती थी कि भाई इस फैमिली में ये प्रॉब्लम है, आपकी बेटी को ये प्रॉब्लम है, आपके यहाँ शादी होगी तो बच्चा जो जन्मेगा वो नॉर्मल जन्मेगा। वो इस तरह का काम करती थी। शी वॉज ए मैच मेकर एंड ए वंडरफुल मैच मेकर। इसलिए इंडिया में जो है वो कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज का रेशियो बहुत कम था जब हम अंडर डेवलप्ड थे, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। 2021 में बोले स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यू बॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस विच इज नॉट इंडियन ओरिजिन। 22 में बोले रिमेन एट होम अमिड कोरोना वायरस, प्रोटेक्ट मदर फ्रॉम कोरोना वायरस। ये 22 का दूसरा जो है थीम, उसमें बोले टू द वर्ल्ड यू आर ए मदर बट टू योर फैमिली यू आर द वर्ल्ड। ये इतना अद्भुत थीम 22 में आया, और 22 में ही जो है अपना ITRA जो है वो सक्रिय होना शुरू हुआ। तो देखिए कि यहाँ से भारतीयता आ गई है। और आज का थीम जो है प्रेगनेंसी डूज एंड डोंट्स, यानी अब जो है सही रास्ते पे
गाड़ी पटरी पर अब आई और अब भागेगी, देखना अब क्या स्पीड में जाती है। तो अब तक क्या था कि ये सब रिपोर्ट्स करवाओ जो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो इसके साथ बात करने के बजाय इसके साथ वो बात कर रही है जो उसको नहीं करना है। इट्स नॉट हर प्रॉब्लम, इट इज द गायनेक एंड ऑब्स्टेट्रिशियंस प्रॉब्लम, लेकिन वो कर रही है। तो ये जो है उसको करने के बजाय हमको ये देखना चाहिए कि शी एंजॉयज दिस डेज, ये दिन बार बार नहीं आते, शी शुड एंजॉय हर मदरहुड डेज। तो ये जो है सेफ मदरहुड बिगिंस बिफोर कंसेप्शन। ये अब बातें लाइन पे आई तो अब बातें होनी शुरू हुई कि बिगिंस बिफोर कंसेप्शन विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्लान प्रोजेन। तो बाकी का तो मैडम ने बोल दिया, इसलिए मैं रिपीटिशन नहीं करूंगी, लेकिन सेफ मदरहुड की एक अम्ब्रेला बनाई है, उसके अंडर में उन्होंने डाला है फैमिली प्लानिंग, एंटीनेटल केयर, ऑब्स्टेट्रिक केयर, पोस्टनेटल केयर, एबॉर्शन केयर, एसटीडी एचआईवी कंट्रोल। मुझे एक प्रश्न होता है, ऑब्स्टेट्रिक केयर बोले हैं तो क्या उसमें एंटीनेटल केयर और पोस्टनेटल केयर नहीं आएगा? उनको यहाँ पे लिखना चाहिए केयर ड्यूरिंग लेबर एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लेबर, ये स्पष्ट लिखना जरूरी था, लेकिन वो तो समझ में आता नहीं। इसीलिए विदाउट कीपिंग अस विथ यू, डोंट टॉक अबाउट अस, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे चेतना इंस्टीट्यूट है, वे लोग तो करीब 20 साल से ये बात कर रहे हैं कि महिला को साथ में रखे बिना आप कोई निर्णय न ले, वो जनहित में है, समाज के हित में है। महिला को साथ में रखिए। और आप मानेंगे नहीं सब, ये प्लेटफॉर्म पे मैं गर्व से बोल रही हूँ, आदिवासी महिलाएं जिन्होंने बस तक नहीं देखी, उस जमाने की, आज से 18-20 साल पहले की बात कर रही हूँ, उन्होंने बस नहीं देखी थी, लेकिन वे मदरहुड की बात करती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई ऑब्स्टेट्रिशियन हमारे सामने बैठा है और बात कर रहा है। तो वो जो हमारा परंपरागत ज्ञान था उसको फिर से रिजनरेट करके उसके आगे बढ़ा के उसका लाभ हम ले सकते हैं। तो ये टिप्स टू एंश्योर सेफ मदरहुड: education about birth safety, that education should mandatorily be given to all members of the society, not only females, also males, कि उसको पता ही नहीं उसकी वाइफ किस हालत में है, वो तो बैठा देख रहा है कि वो ऐसे ही कुछ मचल रही है। अरे मचल नहीं रही, वो लेबर पेंस में है भाई, उसको समझ में तो आना चाहिए। he doesn't know, so he doesn't। दूसरा एक प्रॉब्लम है कि जो मैथुन किस तरह किया जाना चाहिए वो भी पुरुष को पता नहीं, उसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं। तो मदरहुड के लिए, माँ का प्रेग्नेंट होने के लिए उसके जो प्रजनन अंग है उनकी हेल्दीनेस भी होनी चाहिए, और वो समय पे उनका प्रफलन होना चाहिए, समय पे मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए, समय पे ओव्यूलेशन होना चाहिए, और वो जो है वो उसकी सेक्सुअल लाइफ के साथ सीधा जुड़ा है। तो ये बिना सोचे समझे हम लोग सिर्फ महिला को एजुकेट करते रहेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। मेकिंग श्योर ऑल वीमेन हैव एक्सेस टू द नॉलेज एंड रिसोर्सेज दे रिक्वायर टू एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ लिखा है एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी सेफली। सेफ डिलीवरी का मतलब सिजेरियन बिल्कुल नहीं है। माँ तो हो, शिशु हो, अनापत्ति ही। आयुर्वेद का सूत्र है, न माँ को आपत्ति होनी चाहिए न शिशु को आपत्ति होनी चाहिए, और वो टीएनसी तब ही फुलफिल होती है जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, इवन विदाउट वैक्यूम। Safe motherhood means creating circumstances within which women are able to choose whether to become pregnant। उसको pregnant होना है कि नहीं, उसको choice करने का हक है। If she chooses to get pregnant, ensure that she receives care for prevention and treatment of pregnancy complications. She has access to trained birth assistants, और उसको इमरजेंसी जो है वो मिलना चाहिए। तो अब तो काफी बदल चुका है इंडिया। नाउ वी आर रेस में है हम लोग डेवलप, सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज के साथ। तो आज जो है हेल्दी मदर्स मेकिंग अ हेल्दी वर्ल्ड, ये स्थिति आई है जो मेरे लिए बहुत ही आनंद की दायक है। हैप्पी नेशनल सेफ मदरहुड डे। थैंक यू एवरीबॉडी।
for listening me. Thank you, Pavan sir. Thank you, Agnihotri sir. Thank you, IRES, for giving me time to speak on my favorite subject. Thank you. Thank you very much, madam. Thank you very much. Now I would like to request Kamini Dhiman ji. Kamini ji kahan gaye? Professor Agnihotri sir. Thank you, Professor Pavan Sharma ji. Thank you. Really, these are the right persons by whom we can learn a lot, because this subject directly related to them is. But at the same time, we are equally responsible for making this day and this subject safe by virtue of the instructions given by our learned great guest speakers today, that WHO or UNO, they are doing their job and giving the data and giving the instructions or in a form of slogan. But it is the last person who is supposed to perform it, right from the midwife, as Dr. Madam Joshi especially underlined twice, that the right person for all this safe motherhood is none other than the our the previous yesteryear's time Daima, and then now in a converted designation as our say skilled Dai or midwife, ANM, ASHA workers. These are all the full paraphernalia which is responsible for all these activities, as she told, not only simply having a safe delivery, but right from the prenatal period to the targeted couple to the family planning and seeking the safe ANC, and also till the safe postpartum. Means that there should not be any such type of complication which has otherwise takes place because of the negligence. So these are the subject which has to be taken into consideration, and especially the emphasis to be given to the remote area, outreach area, because in the urban life, the persons are having choice to go to the hospital of their choice. On other hand, see, in the remote area or where the Ayurvedic dispensaries are situated, if the delivery or labor system is not in practice, it's difficult for them to have a safe motherhood or a safe labor. So still the work is to be done a lot, especially India is a vast country of having 140 crore population. So as she told that 2 crore pregnancies are taking place every year, and out of that 5 lakh mothers or would-be mothers dies simply because of the unsafe motherhoodness. That's why the world authorities took initiative to see that how the safe motherhood day message will be baptized in the whole of the related sector of population, is what we can say. And we are sincere enough to take the benefit of it, this celebrations, to teach each and every person, right from the adolescent age, right from the puberty age, in the school education itself, that they are supposed to be taken care of for the best possible motherhood. Thank you so much for giving me the opportunity to say a few words on this topic. Thank you. Now session is open for 10 minutes, sir. Okay. 10 minutes left. Well, it's fantastic. So Professor Dhiman was very much there, but if she is not in position to deliver the guest speech, she can extend her views or some consolidated points. I'm which ringing her, but she is busy, I hope. Anyway, we have got a number of other persons, and before we go for the second webinar, as we have got 10 minutes time, we can take the benefit of our few senior doctors, those who are working in the hospital, and their colleagues are there in the Prasuti anesthesia department. They might be having some good experiences. So we can start with the Dr. Dinesh Prasad from Patna, as he might be having a lesser, say, facilities there in their state or in college. Yes, sir. Namaskar. नमस्कार सब लोगों को नमस्कार। जो है काफी अच्छा मैडम का जो है टॉक रहा, जो है
और हमारे यहाँ सर तो बहुत अच्छा प्रसूति की स्थिति नहीं, हमने पीजी वैसे जी, खुलवा मैंने रखा है, किया जी। लेकिन फिर भी सर यहाँ चूंकि टीचर की बहुत कमी है और जो भी टीचर है बहुत सीनियर टीचर नहीं है, तो इस वजह से अभी यहाँ डिलीवरी वगैरह नहीं के बराबर हो पा रहा है, कुछ अगर ओकेजनली हो जाता है। और बकिए जो उत्तर बस्ती वगैरह और सब काम हो रहा है, और हम समझते हैं कि काफी जो होना चाहिए उसमें और आगे बढ़ने की संभावना है जो है। आगे देखिए सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि लेडी टीचर्स कमी है, तो आपके हॉस्पिटल में जो जैसे सर्जन्स हैं या काय चिकित्सा के लोग हैं या ईएनटी के लोग हैं, बाल लोग के लोग और भी जो लोग हैं, उनको ये इस तरीके से प्रेगनेंसी पीरियड के लेडीज को अटेंड करने का इन सबको मौका मिलता होगा, या इन जनरल या कैंप लगाते होंगे, तो वो कुछ मैसेज दे के इस मदरहुड की सेफ्टी के लिए कुछ कर सकते हो? उस दिशा में आपने कुछ काम कर रखा हो तो उसको थोड़ा बताने की कृपा करें। वही सर बताएं कि जो है हमारे जो हॉस्पिटल में जो है चूंकि गायनी डिपार्टमेंट अलग है, इसलिए दूसरे जो है डिपार्टमेंट के लोग जनरली टच नहीं करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं जो है गायनी डिपार्टमेंट में। और गायनी डिपार्टमेंट में चूंकि लोड ज्यादा है, टीचर्स कम है जो है, तो इस वजह से जितना होना आउटपुट देना चाहिए उतना हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में कैंप वगैरह में कुछ काम जो है होते रहता है। कैंप में हमारे जो पीजी स्टूडेंट वगैरह होते हैं वो जाते हैं और फॉलो अप करते हैं, वो उसके माध्यम से कुछ हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो उसको हम लोग फॉलो अप करते रहते हैं। हेलो, बहुत अच्छी बात बताई आपने। क्या ये भी संभव है कि आपके कॉलेज में टीचिंग के लिए ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स या लेडी डॉक्टर्स का कुछ गेस्ट लेक्चर्स का अरेंजमेंट हो रखा हो? हाँ सर, एक अभी पार्ट टाइम जो है ना, एक 3 दिन के लिए जो है मैंने मेडिकल कॉलेज नहीं तिब्बी कॉलेज में जो है एलोपैथ का पोस्ट क्रिएट हुआ था गायनोकोलॉजिस्ट का, तो उससे एक लेडी डॉक्टर आ रही हैं और वो कुछ काम करा रही हैं। लेकिन जो क्योंकि पीजी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ खुल गया है, 7 एडमिशन हुए हैं, तो उस लेवल पर अभी नहीं, प्रसूति में भी आ गई एमडी। जी प्रस्तुति में भी फिर तो आप जल्दी से भरिए ना, फिर तो आप बीएचयू मांगिए आपको। जी लगातार मांग हो रही है सर, लेकिन स्टेट की कुछ पॉलिसी ऐसा है कि नहीं हो पा रहा है इन साल। मैंने सही क्वेश्चन पूछा आपसे, आप जल्दी से जल्दी रिक्रूट करिए। और एक जो अपनी जननी सुरक्षा योजना है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल से स्टेट लेवल पे चलती है, तो वो आपके कॉलेज में आ जाएगी, आपके हॉस्पिटल में। हमने सर अपने टाइम में जननी सुरक्षा से इसको जोड़ दिया था, वहां से फंड वगैरह भी आ रहे थे, लेकिन मैंने मैन पावर के कमी के वजह से वो सक्सीड नहीं हो सका जो है, उसको फॉलो अप ढंग से लोग नहीं कर पाए। भरिए हॉस्पिटल के दृष्टिकोण से, स्टूडेंट के दृष्टिकोण से और जनता के दृष्टिकोण से जनहित के लिए बहुत जरूरी है। देखिए एकदम सर, ये हम मानते हैं, हमने अपने टाइम में काफी कुछ किया था, लेकिन हमारे आने के बाद जो अभी प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर उतनी ध्यान उनका नहीं जा पा रहा है, जिसके वजह से जो है। अभी आप दरभंगा में कि बेगूसराय में, कहाँ हैं? नहीं सर, अभी तो रिटायर्ड होकर के पटना में आ गए। पटना में आ गए। चलिए, जहां भी हैं आप अपने ज्ञान से तो लाभान्वित करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वस्तुस्थिति से हम लोगों को अवगत कराया। इसी क्रम में अभी हमारे पास 2-3 मिनट और हैं। हम डॉक्टर महेश शर्मा जी, आपका पास बहुत लंबा अनुभव है। आदरणीय महेश शर्मा जी, आप आज के सेफ मदरहुड के लिए कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे जो डिस्कशन आया है उसके तहत, उसके आगे? सर आप ज्वाइन कर रहे हैं? इस बीच हमारे पास हमारे प्रोफेसर लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, जो हमारे एनआईए से रिटायर्ड हैं। हालांकि उनका विषय अर्थशास्त्र रहा है, लेकिन एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, एज ए हॉस्पिटल मेंबर, आपके पास सर कुछ अनुभव है मदरहुड को और कैसे प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से? कहाँ नमस्कार जी। नमस्कार। ज्यादा इस लाइन में तो अनुभवी नहीं हूँ, किंतु ये आयोजन वगैरह होते रहते हैं। जीवन में कभी 1-2 प्रेगनेंसी देखने का काम करने का मौका मिला, जब कभी गाँव में हम लोग पोस्टेड थे 2-2.5 साल। तो सब वही हॉस्पिटल का जो प्योन है तो जो है ना, उसकी बच्ची के लिए डिलीवरी होनी थी, और गांव में तो वो प्योन ही डिलीवरी करवाता है ना। किंतु जब अपने ही घर का मामला है, सर आप चलिए, तो हम गए थे। और उस समय जो कुछ अनुभव है वो ऐसा है कि गाँव में दोनों तरह का होता है। वो देवता को भी मानते हैं, गोपा जी भी वहां आते हैं, बाल बिखेर करके वो उतरते हुए जब उसको एक इंजेक्शन लगाया उस समय, क्योंकि कंपाउंडर खुद प्रैक्टिस करता था गाँव में, साहब मेरी बेटी इसलिए आप लगा दो,
तो हमने कोरोमिन लगाया और वो सब उसका जो है ना भाव वगैरह सब चला गया और उसने पानी मांगा। फिर उससे पूछा कि भाई ये क्यों किया, तो सब सर ये यहाँ पे धुआं ज्यादा देते हैं अगर ये नहीं करते तो जनरली बोबा जी होते हैं वो एक मुर्गा और शराब की बोतल और ऐसा मांगते हैं, ऐसा गाँव में चल रहा था उस समय, ड्राई एरिया था राजस्थान। फिर भी बाद में उसको पीएचडी ले गए और हमारे फ्रेंड ही थे वहाँ डॉक्टर, तो वहां पे उन्होंने जब तैयारी करी तब उस समय डिलीवरी हो गई और बच्चा हुआ। तो ये एक अनुभव ऐसा है कि सब गाँवों में आज भी उस तरह की स्थिति है, चाहे मिडवाइफ हो या कुछ भी हो, जो प्रैक्टिशनर हैं गाँव में वो उस तरह के हैं कि सब वो मॉडर्न का प्रचार वहाँ करते हैं और वहाँ की स्थितियां जो है उसको किसी से छिपी नहीं है एकदम। आज तो 30 साल 40 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जब करीबन ये 80 से पहले की बात है, तो 43 साल तो हो ही गए। तो ये देखिए कि साहब जीवन में 2 या 3 केस हमने अपने हाथ से हैंडल किए और उसमें ये एकदम मातृ सुरक्षा वाली बात है, साहब पेशेंट मरा नहीं और सुरक्षित प्रसव हुआ, किंतु वो केवल समझ की वजह से, बाकी वो तो गांव में हॉस्पिटल का प्योन भी डॉक्टर है जी। तो उसने फिर ये सब आपके यहाँ तो जो आता है बच जाता है, बाकी सब हम उस जगह नहीं जाते। उस जमाने में जो नसबंदी कार्यक्रम चला था तो पीएचडी वैसे बदनाम थे गाँव में, तो वहाँ जाते नहीं थे। सर आपने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एक कहना चाहिए एक सेंसिटिव बहुत ही संवेदनशील विषय आपने उठाया कि ये वास्तविकता है। जैसे आपने राजस्थान चर्चा की, मैं अपना थोड़ा उत्तराखंड का बताऊं जब तक पवन जी अपनी नेक्स्ट उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरे यहाँ उत्तराखंड में अलग अलग स्थिति है। कारण क्या है, उत्तराखंड तो अभी बना, जब उत्तर प्रदेश में था तो भी यही समस्या थी। स्केटर्ड पॉपुलेशन होती है और तब तो 5 ही जिले थे और कोई उत्तरकाशी में, टेहरी में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, टनकपुर में